Good morning, children of class 3. Hope you are fit and fine and enjoying your holidays along with lots of studies. During these quarantine days, we will take care of your education through this MPS YouTube educational channel and through Telegram app. So this is your literature teacher Shadma ma'am is back again with one more educational video. So I'd like to welcome children of class 3. So before starting the story, I would like to request you children to take out your English literature book, that is Holy, a main course of English reader, this book. So I am giving you a quick introduction. Actually, do you know children, trees are our best friend. Trees helps us without any complaint and without any demand. And in fact, trees enhance the beauty of our earth. And trees provides us all those things which we need for survival. Through this introduction, I think आप लोग aware हो गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. So through this video, you are going to learn about the importance of trees. Means you are going to get knowledge about the importance of tree. Why do we need tree? So let's get started. Children, take out page number 45, chapter 8, Importance of Tree. Trees are our best friend in nature. They give food to eat and firewood to burn. We build houses and make furniture with timber. Timber is a kind of wood which we use to make furniture, like table, chair. होता है ना, wooden table, wooden chair. When you sit in classroom, along with that iron body, you have seen that slab of bench is made up of wood. So that is timber. The pulp for making paper is provided by tree. When we think of trees, we think of their cool shade. Children play around the trees, and the tired traveler rests under them. Actually, as earlier I have mentioned that trees are our best friend, which gives us so many things without any complaint and without any demand. What are the uses of trees in this paragraph? We have seen we use trees to collect firewood. जलावन के लिए लकड़ियाँ हम लोग कलेक्ट करते हैं trees के लिए से, and we use trees to make furniture also. हम लोगों का जो घर पे पलंग होता है, यानी कि जो घर पे जो बेड होता है, वो बेडिंग जो है, कई बार हम लोगों ने देखा है कि बेडिंग जो है किस चीज़ से बनी होती है, वो पूरा स्ट्रक्चर बना होता है वुड से. एंड जब हम लोग क्लासरूम में आते हैं और हम लोग टेबल पे बैठते हैं, तो वो टेबल किस चीज़ का बना होता है? ऑफकोर्स विथ आयरन से बना होता है, लेकिन आयरन के ऊपर जो स्लैब लगा रहता है बेंच पे, वो स्लैब किस चीज़ का होता है? That is made up of wood. In fact, this duster you can see, it is also made up of wood. So, trees gives us wood and firewood. Firewood यानी कि जलावन के लिए लकड़ियाँ, and wood to make furniture, means timber we get. And you can see that this is what? This is a paper. And this paper is made up of that soft pulp which we get from wood. Wood से जो soft छाल मिलती है हम लोगों को, उस छाल से जो है हम लोग पेपर बनाते हैं. And sometime in park, children used to play around trees. है ना, हम लोग सर्कल बना के गोल गोल घूम कर खेलते हैं trees के around. And sometime the tired traveler means those person who travel from one place to another. मतलब वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, कई बार ऐसा होता है कि वो लोग धूप में घूमकर थक जाते हैं और उन्हें छाया की जरूरत पड़ती है. शेड मीन्स छाया. तो उन्हें छाया कहाँ से मिलेगा? उन्हें छाया जो है ट्री से मिलेगा. सो ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड, एंड फ्रॉम ट्रीज वी गेट शेड, we get wood pulp to make paper, we get wood as to use it as a fuel. ठीक है, जलावन के लिए लकड़ियाँ मतलब. फिर we get wood to
make furniture also. Trees do much more than giving us fruit, furniture and paper. Trees जो है फ्रूट्स, पेपर और जलावन के लिए लकड़ियाँ या फर्नीचर देने के अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें करता है. Trees do much more than these things. They support the life of living things. Support the life of living things. Who are living things? We are living things. And animals are living things. Means living things means वो चीज़ें जिनमें जान होती है. So trees support the life of living things. They replace the oxygen that get used up when living things breathe or burn anything. Actually, trees provide us oxygen. Or sometimes what we do, we used to burn so many things. Like we used to burn paper, we used to burn coal, and from that coal, certain harmful gases are come out. बहुत सारे harmful gases जो है उससे रिलीज होते हैं. ओके, कोल से और वुड से. What trees do is trees convert those gases into oxygen. उसको जो है अपने अंदर absorb करके हम लोगों को ऑक्सीजन देता है. हम लोग जब इनहेल करते हैं यानी कि सांस अंदर की ओर लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, एंड जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. सो फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस ऑक्सीजन? We are getting this oxygen from trees. In fact, even the meat that man eat is produced by plant-eating animals. Sometimes people used to eat meat. So मांस यानी. So from where do we get meat? We get meat from those animals who eat or who used to consume plants. जो एनिमल्स प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, कई बार उनको जो है उनका मीट हम लोग खाते हैं. और समटाइम दैट मीट आर हेल्पफुल फॉर आवर बोन एंड फॉर आवर बॉडी. सो इनडायरेक्टली हियर प्लांट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस बिकॉज दैट एनिमल आर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट. वो जो एनिमल है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहा है? प्लांट से. एंड व्हेन वी कंज्यूम दैट पर्टिकुलर एनिमल देन we get nutrients. तो indirectly वो nutrients कहाँ आया? हमारे अंदर. For example, we used to consume goat. तो goat trees, plants, greeneries को खाते हैं. ठीक है? Herbivorous animal है plants. Then we used to in many places people in fact used to consume sheep also. In Jammu and Kashmir people used to consume sheep. और sheep भी जो है क्या खाते हैं? Grasses, plants, product. They also eat these. And do you know these meat of animal are very good source of nutrients. बहुत सारे vitamins हमें मिलते हैं and हमारे bones के लिए भी अच्छा होता है. So indirectly we can see that trees are helping us because trees helps in surviving those animals also, and we are surviving by eating those animals. The tiger and lion are feed on deer which eat plants. Sometimes, in fact, not only human being, tigers and lion also means those animals who are carnivorous. Means those animals who eat only meat. जो animals सिर्फ meat खाते हैं, वो लोग भी जो घास खाने वाले animal है या जो trees product खाने वाले animal है, उनको consume करते. For example, tiger and lions. Tiger and lions used to eat what? Deer. And deer जो है क्या कंज्यूम करती है? ट्रीज को, प्लांट प्रोडक्ट को. So tigers and lions also feed on deer which eat plants. Thus the plants supply us two most important necessities of life, namely oxygen and food. Necessity means two important things. Need, something which means when we are in need then it is a stage of necessity. जब हम लोग किसी चीज की जरूरत में होते हैं तो उसको उस जो स्टेज है या उस टाइम पीरियड को हम लोग नेसेसिटी बोलते हैं. एंड प्लांट फुलफिल आवर two important necessities. What are those? First is oxygen and second is food. So oxygen, plant give us oxygen and we breathe in we inhale
like this, oxygen, we are taking oxygen, okay. And food means those meat, okay, those what to call, we are getting meat from those animals who used to consume plants or plants product. So thus the plants supply us two most important necessities of life, namely oxygen and food. Why are told that cause rainfall? We usually say, we are told that trees cause rainfall. How? Here sometime we from our elder we used to listen that actually we used to hear that trees is a reason behind the rainfall. जब बारिश होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट वाटर साइकिल तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो है ट्रीज भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. बट नाउ यू आर थिंकिंग हाउ, कैसे? द tree leaves breathe out a lot of water vapor into the atmosphere. This helps to make the air cool. That is why on a hot day it is cooler under tree than inside a building. Actually, do you know trees also breathe like human being? जैसे हम लोग जो है सांस लेते हैं वैसे ही trees भी breathe करते हैं. And we used to release air. Okay, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, but while breathing trees release water vapor. वाटर वेपर को ट्रीज जो है रिलीज करती है और वो ट्री वाटर वेपर जो है जाके एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाता है. एंड सो ड्यूरिंग द हॉट विंडी डे वी समटाइम फील कि हम लोग ट्रीज के पास अगर बैठे तो हम लोगों को जो है एक शेड में ठंडापन महसूस होता है. ओके, वी फील कंफर्टेबल देयर. द रीजन इज दैट trees used to breathe out air, cool air, which sometimes cool down the nearby atmosphere. Tree के nearby जो वातावरण है या environment है वो जो है cool down हो जाता है. इसीलिए when we feel comfortable in comparison to sit inside the building. इस बिल्डिंग के अंदर बैठने से ज़्यादा कंफर्टेबल जो है हम लोग फील करते हैं कहाँ? ट्रीज के शेल्टर में बैठने के. Okay, so again I am repeating, this helps to make the air cool. That is why on a hot day it is cooler under trees than inside a building. The cool air over forest cools the cloud and helps them to cause rain. Actually, now you are getting why rainfall occur. जब nearby बहुत ज़्यादा forest होता है तो you can feel that automatically you can feel that the environment are cooler than those area where the trees are in scarce number. मतलब जहाँ पे scarcity है tree की और जहाँ पे बहुत ज़्यादा trees हैं, दोनों में अगर if you will compare then you can find out that those area which is abundant with trees, you can see that वहाँ पे जो environment है that environment is more cooler than those area which are suffering from scarcity of tree. मतलब जहाँ पे बहुत कम trees है, scanty amount of trees. So sometime the cool air get more cool, वो और ठंडा हो जाता है और वही रीजन बनता है कि वो ठंडा क्लाउड का फॉर्मेशन होता है एंड रेनफॉल अकर होता है. This explains why rainfall over forest area is greater than the other place. And these things are stating that why the rainfall is more in forest area than the other area. क्योंकि जो forest area है वहाँ पे जो wind है जिसमें moisture है या water vapor है वो और ज़्यादा ठंडा हो जाता है. And वो और ज़्यादा ठंडा होने के बाद जो है as we have studied कि temperature जब कम होता है तो वो आसमान में cloud का formation होता है. ठीक है, वो water vapor जो है cloud में convert होता है and precipitation यानी कि rainfall होना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है temperature थोड़ा ठंडा है as compared to these area where we are living. So जहाँ पे forest है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है. Trees hold the soil together
together. They save it from being washed away by showers. Our earth has covering of fine soil on the surface. Under the soil lies rock. This soil cover grows grass and plant. Their root hold the soil together. When we used to dig out the plant, जब हम लोग प्लांट को निकालते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि प्लांट हैव रूट्स, और वो रूट कहाँ लाई करते हैं? वो रूट लाई करते हैं सॉइल में, ठीक है? सो सॉइल इज अ ग्रेनी लेयर, ओके? सॉइल इज अ थिन ग्रेनी लेयर विच हेल्प्स इन ग्रोइंग प्लांट्स इनटू ट्री. जो सीड है उसको प्लांट में ग्रो करने में और प्लांट को बाद में ट्रीज में ग्रो करने में हेल्प करता है, बिकॉज सॉइल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट. बट हियर सॉइल ट्रीज ऑल्सो, रूट ऑफ ट्रीज ऑल्सो होल्ड सॉइल. वो सॉइल को जो है पानी में धंसने से बचाता है. जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो हम लोग देखते हैं कि जिस जगह पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है वो मिट्टी धुल जाती है, लेकिन अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज है या बहुत छोटे छोटे प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो उसका रूट जो है उसको होल्ड करके रखता है, यानी कि टाइट ग्रिप बना के रखता है जो उसको वहाँ से बहने से बचाती है. Trees supply so many things which are useful to us. As earlier I have mentioned that trees provide those things which we use for survival. For example, I have mentioned earlier also timber to make furniture, pulp to make these papers, then firewood यानी कि जलावन के लिए लकड़ियाँ. Sometime when we feel cold, we used to sit near that burning wood. Or sometime in villages you can see that people are using to cook food. उसको जला के उस पर अच्छे से उसको चूल्हा बना के उस पर खाना भी बनाते हैं. So apart from these things, trees also provide us fruit which we eat. बहुत सारे fruits like guavas होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रीज में guavas होते हैं, mangoes होते हैं. There are n number of fruits and the source of fruits are trees. In fact, trees also provide us grains. Grains means anaj, that rice we consume, wheat we consume, gram we consume. All those things we are getting from plant or trees. Then we get vegetable. Okay, सब्जियां. हम लोगों को हरी सब्जियां भी और बहुत सारी सब्जियां जो है we get from plant. Plant and trees are the sources of vegetable also. Then we are getting valuable medicine. Valuable means important medicine. बहुत सारी important चीजें होती हैं जो हम लोगों को प्लांट से मिलती है. In Ayurvedic medicine you can see that Ved used to make medicine. जैसे इंग्लिश में डॉक्टर होता है वैसे संस्कृत में वेद कहा जाता है, ठीक है? वैद्य जी. So that Ved ji used to prepare medicine from those plant product. Okay. The branches of trees give shelter to millions of birds. It not only help us or help animal, it helps bird also. Plants helps bird also. Plant provide or plant gives shelter to birds also. The branches of पेड़ का जो तना होता है, that branches what to say, that bird used to make nest around that. Bird जो है वहाँ पे nest बनाती है और वहाँ पे रहती है. Shelter means to provide, like we are living in brick house, mud house, whatever kind of house we are in living, that is our shelter because that protect us from any kind of danger, bad weather. हम लोगों को बुरे मौसम में या फिर डेंजर से बचाता है. In the same manner, the branches of trees provide shelter to birds, and bird used to make nest there and used to live. Bird sometimes lay eggs there, वहाँ पे अंडे देती है and उसको protect करती है. And those branches provide protection to that birds. Forests give shelter to countless wild animals, as earlier I have mentioned. The green leaf and grass refresh the eyes and also the mind. जब हम लोग ग्रीनरीज को देखते हैं तो वो हमारे माइंड को भी रिफ्रेश करता है because of
large area of our country were covered with forest. As the population grew, we cut down trees to get more and more land for agriculture, houses and industries. Once upon a time, long years ago, when population was very low, मतलब लोगों की जनसंख्या जो है बहुत कम थी, our whole country was surrounded with different kind of trees. But as the population started growing, people started cutting down those trees to establish industry, to build houses and to get more and more area under cultivation. मतलब और भी एरिया को जो है एग्रीकल्चर के लिए और भी एरिया को जो है कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर के लिए यानी खेती करने के लिए जो है वो कलेक्ट कर सके. ओके, इसीलिए गेट कर सके मिले उन्हें, इसीलिए उन्होंने ट्रीज को कट डाउन करना शुरू कर दिया. A great part of our forest wealth has been lost, and due to this, a great part of our forest has been lost. हमने जो है एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉरेस्ट को इस वजह से खो दिया है. एंड स्टिल नाउ वी आर व्हाट टू कॉल, वी आर लूजिंग दैट. हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट रिसोर्स स्टिल वी आर लूजिंग दैट. A new festival has been started for this purpose. It is called Van Mahotsav or Afforestation Festival. In order to protect trees or in order to protect forests, we started celebrating a festival called Van Mahotsav. Since trees are the country's real wealth, it is our sacred duty to protect them. Are trees living things? Sometimes people used to ask, are they living things? Trees are the most long-lived creature on the earth, and yes, trees are living things. Trees जो है हम लोगों से भी पहले से सर्वाइव कर रहा है. मीन्स जब ह्यूमन बीइंग नहीं बने थे तब से जो है ट्रीज सर्वाइव कर रहा है. एंड ट्रीज ही ने एक प्री रिक्विजिट कंडीशन प्रोवाइड किया कि ह्यूमन बीइंग जो है सर्वाइव कर सके, एज अर्लियर आई हैव मेंशन्ड आल्सो. बट द फैक्ट इज दैट दे आल्सो ईट, drink and breathe as animals do. They also sleep at night. The touch me not plant folds its leaf and even grows back from human touch. Touch me not, that is Chuimulka plant. So in this chapter, you got knowledge about, or you acquainted the fact that how trees are important. Trees are necessary because it provides us oxygen, food, grains, pulp for making paper. Pulp for making paper. Then we get timber to make furnitures, or sometimes we use wood as a firewood. जलावन के लिए लकड़ियाँ. So now let's move on to word dictionary. Means here I will clear your doubt regarding the difficult words. So first is importance. Importance, as the name of topic is importance of tree, यानी कि जरूरत means need. Importance यानी कि जरूरत. Necessities, the need for something. The need for something. As earlier I have explained this word necessity means when we need something. जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो वो जो है वो जो पर्टिकुलर स्टेज है उसको नेसेसिटीज कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज आर फुलफिलिंग आवर नेसेसिटीज. ट्रीज आर फुलफिलिंग आवर नेसेसिटीज. सो ट्रीज जो है हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है. फूड आर फुलफिलिंग द नेसेसिटीज ऑफ बॉडी. यानी कि जो फूड है जो हम लोग खाते हैं वो हमारी बॉडी की नेसेसिटीज यानी कि जरूरतों को खत्म करता है या पूरा करता है. शेल्टर. शेल्टर मीन्स समथिंग दैट गिव्स प्रोटेक्शन. हियर आई हैव रिटन एब्रिविएशन ऑफ समथिंग. समथिंग का जो छोटा एब्रिविएशन, छोटा वर्ड होता है वो मैंने लिखा है. सो समथिंग दैट गिव्स अस प्रोटेक्शन. वी लिव इन अ हाउस. ओके, दैट हाउस इज आवर शेल्टर. हम लोग जो घर में रहते हैं वो घर हमारा शेल्टर है, बिकॉज दैट हाउस
On the branches of trees, bird make nest and branches act as shelter for those trees. those birds. यानी कि वो जो है उन लोगों को बैड वेदर और डेंजर से बचाता है. So shelter. Shelter means kind of house, you can say. Purpose. Purpose means aim. Purpose means aim. Sometimes when we see the spelling, we used to pronounce purpose. No, this is wrong. Purpose. The correct pronunciation is purpose. Purpose means aim. यानी कि goal. For example, my purpose of coming school is to get education. मेरा purpose या मेरा aim जो है स्कूल आने का वो है education पाना. The purpose of eating food is survival. जो हम लोग food खाते हैं उसका main goal है survival. Okay, so purpose means aim. Every morning I used to do walk. Purpose of my morning walk is to get healthy body. यानी कि मैं जो morning walk करती हूँ उसका जो है purpose यानी कि aim जो है healthy body पाना है या स्वस्थ रहना है. Next is holy, sacred, which means holy. Sacred, which means holy. Holy means pavitra. Sacred means pavitra. For example, Quran is a sacred book of Muslim. Gita is a sacred book of Hindus. Okay. फिर Makkah is sacred place of Muslims और temples are sacred place of Hindus. यानी कि पवित्र स्थान है हिंदुओं का, पवित्र स्थान है मुस्लिम्स का. Next word is afforestation. To establish forest cover on. यानी कि जब हम लोग किसी जगह पे बहुत ज़्यादा प्लांट लगाते हैं और फॉरेस्ट की संख्या को हम लोग बढ़ाते हैं, that is afforestation. Afforestation helps us or afforestation will prevent us from global warming in future. जो तापमान बढ़ रहा है, afforestation यानी कि lots of area covered with lots of plants and tree can help us from getting rid from global warming. Next is protect. Protect means save. Shelter protect us from danger. Shelter जो है यानी कि हमारा घर जो है हमें बचाता है, सेव करता है danger से. My friend protect me from every bad situation. जितने भी bad situation है वहाँ से मेरे friend जो है मुझे protect करते हैं. Wealth means valuable material. Wealth means valuable material. We used to say one quote, health is wealth. यानी कि जब हम लोग healthy हैं तो healthy रहना जो stage है वो हमारे लिए बहुत valuable है, यानी कि important है क्योंकि वो हम लोगों को productive बनाता है. So wealth is valuable material. So that's all for today's video. Thank you and happy learning.